Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 12th, 13th and 14th of July. The session will be quite interesting, and in this video students we are talking about Jyotiraditya M. Scindia, who has inaugurated the VTU VRIF TCOE hub and spoke COE in Bengaluru, Karnataka. We will be discussing it, what this is. Then Ministry of Tribal Affairs has launched the first RPL under the Adi Karam Yogi Abhiyan in Bengaluru, Karnataka. Then MEITY and BITS Pilani has signed an MOU to launch professional development programs in cybersecurity. And Indian Railways signed an MOU with DFCCIL to deploy MVIS train safety system. All these things and many more will be discussed here. If you are new here, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. These videos are quite important and beneficial for all the students preparing for competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. India Energy Storage Week 2025 was held from 8th of July to 10th of July, and it was held in New Delhi. So the first question is the location. Where was this India Energy Storage Week was held from 8th of July to 10th of July, and this is the 11th edition of this India Energy Storage Week. So this is your second question that you need to remember, right? It was held in New Delhi, and in New Delhi too, where it was held at India International Convention and Expo Center, that is Yashobhumi. In this Yashobhumi, that is in New Delhi, this event was held. This was, and also remember, this 3-day international conference of this India Energy Storage Week was organized by India Energy Storage Alliance. This is the next question, that this event was organized by whom? It was organized by India Energy Storage Alliance. This conference, it saw the participation of over 30 countries, including more than 200 partners and exhibitors. More than 10,000 visitors were present here, right? Apart from this, if we see that this conference, we saw this, then Union Minister of State Harsh Malhotra, right, who is our Union Minister of Road Transport and Highways and Ministry of Corporate Affairs, inaugurated a key session that was titled India's Roadmap for Vehicle Electrification at this event. Then apart from this, Telangana based IESA Industry Excellence Award 2025 were presented under the category of state leadership in the battery manufacturing, and IESA has released their latest IESA India Hydrogen report during the inaugural ceremony of this event. This report has projected that India's hydrogen demand, it is expected to increase at a CAGR of 3%, reaching 8.8 million metric tons per annum. Right, so these are some things you need to remember. Then if we talk about IESA, that is India Energy Storage Alliance, who is the president here? Deb Mallya Sen. Where is the headquarter? It is headquartered in Pune, Maharashtra, and it was established in 2012. Next is Union Minister Jyotiraditya M. Scindia has inaugurated this VTU VRIF TCOE hub and spoke Center of Excellence in Bengaluru, Karnataka. What is this we are talking about? This is your, let me show, this is your two things, VTU VRIF TCOE hub and spoke Center of Excellence. These two things were inaugurated where? At the VTU, that is your Visvarya Technological University in Bengaluru, Karnataka. This, if we talk about them here, this is, if we talk about this VTU VRIF TCOE, this is a collaboration between three organizations, you can say. First is your Visvarya Technological University, VTU. Then VRIF, it is your Visvarya Research and Innovation Foundation, that is VRIF. And then comes your Telecom Center of Excellence, right? This strategic partnership between them, basically it will promote the ecosystem of innovation with a focus of 5G, 6G communications, AI, machine learning, augmented reality, virtual reality, quantum computing, and the fierce topic of today's world,
right? And this new center of excellence, telecom center of excellence, this will be a launchpad for deep tech research and startup incubation. Correct? Take a note of this. So these two things has been recently launched. Apart from this, students, during this only, Jyotiraditya Scindia has also addressed the gathering at the Grameen Dak Sevak Sammelan in Bengaluru that set up an important roadmap for the future of India Post. Next is Ministry of Tribal Affairs. They have launched the first RPL under the Adi Karamyogi Abhiyan in Bengaluru, Karnataka. Right? What is RPL? It is your Regional Process Lab. So Ministry of Tribal Affairs, they have launched the first Regional Process Lab of Adi Karamyogi Abhiyan, that is the National Mission for Responsive Governance in Bengaluru, Karnataka. This initiative, it seeks to create a vibrant network of 20 lakh tribal grassroots functionaries and village level change makers who will lead the inclusive development efforts and enhance last mile service delivery in the tribal region. Right? Also, if we talk about the Bengaluru's Regional Process Lab, this is basically here various state master trainers will lead the state process labs, which will in turn train the district master trainers. So from state master trainers, they will be training the district master trainers, right? And this program will integrate the civil society organizations also to strengthen the collaboration, right? So this is your RPL, that is your Regional Process Lab. If we talk about Adi Karamyogi Abhiyan, this was launched in June 2025, and the aim of which basically is to improve the life of the tribal communities, to provide them with better services, right? So Ministry of Tribal Affairs, they have launched the first RPL under Adi Karamyogi Abhiyan in Bengaluru, Karnataka. Next is MEITY, that is Ministry of Electronics and Information Technology, and BITS Pilani, they have signed a memorandum of understanding to launch the professional development program in cyber security. I repeat, MEITY, they signed an MOU with Rajasthan-based BITS Pilani to launch an 8-week professional development program in cybersecurity for professionals from the government's PSUs and private sector. The aim of this program is to build a skilled cybersecurity workforce across government, PSUs, industry, and this will commence on 19th of July. Correct? Here the courses will be conducted by BITS Pilani, right? There will be various other collaboration also a 8-week hybrid cyber security program will be there. Here the participants will be learning about the cyber threats, network security, virtual private networks, cryptography, legal frameworks, and many more. Moving on, next is Indian Railways. They have signed an MOU with DFCCIL to deploy the MVIS train safety system. What is MVIS? It is machine vision based inspection system for monitoring the health of the rolling stock. So Indian Railways, they signed an MOU with Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, that is DFCCIL, that is a public sector undertaking under the Ministry of Railways, for the installation of this MVIS for monitoring the health of the rolling stock. Right? And this MVIS, this will be an AI and machine learning enabled technology deployed that will be deployed along the railway tracks. This will capture the high resolution images of the undergear of the moving trains, and it will automatically detect the loose or missing components that will enhance the safety, so that after these images are released, they will be giving a warning, and based on the warning, that particular product or that particular equipment will be changed or maintained, repaired. Next is Kerala's Arthankul police station has received the ISO certification from BIS, right? So Arthankul police station, that is in Alappuzha, Kerala, was awarded the International Organization for Standardization this certification for the quality management system by BIS, and with this it became the first police station in India that has received the ISO 9001:2015 certification from BIS, recognizing their commitment to qualify service and efficient policing standard. And this certification process, it included 2-stage audit which assessed the risk management, quality processes, modern complaint handling protocols, and many more. Next is Mumbai's Karnak Bridge has been renamed after the success of Operation Sindoor. I repeat, Devendra Fadnavis, the Chief Minister of Maharashtra, inaugurated the new Karnak Bridge in Mumbai, Maharashtra. It was renamed as Sindoor Bridge in the honor of Operation Sindoor, the military operation that was launched by the Government of India. And the renaming of the bridge also aims to erase the colonial legacy of British Governor James Rivet Karnak, who served as the Governor of Bombay from 1839 to 1840.
41. Next is international affairs students. Forbes has released the America's richest immigrants 2025 list, and India is leading in this list, where Jay Chaudhary is in the top 10 position. So this list was released by Forbes first thing. It is the America's richest immigrant list. Immigrants are the people who move from different country to USA or America, right? And in this list, it revealed that India is the top country of the origin with 12 Indian born billionaires, the highest number of immigrant billionaires in the USA. And Jay Chaudhary, the CEO of Zscaler, is the only Indian origin billionaire in the Forbes top 10 immigrants billionaires list, and he was ranked 8th in this position with $17.9 billion of net worth. Correct? And here if we see 125 foreign born USA billionaires from 43 countries hold about $1.3 trillion of USA's total wealth. And India has overtaken Israel and Taiwan to emerge as the number one source of immigrant billionaires in USA, with 12 Indian born billionaires, up from 7 in 2022. Moving on. Here only students, let me show you. If we see on the first position is Elon Musk, right? His country of origin is South Africa with $393.1 billion of net worth. Then Sergey Brin of Russia with net worth of $139.7 billion. Then Jensen Huang of Taiwan with $137.9 billion of net worth. So first, second and third. And Jay Chaudhary of India on the on the 8th position. Next is WTTC. They have released the top 10 global tourism economies for 24-25, and India has ranked 8th, whereas USA has topped the list here. So what is this WTTC? It is your World Travel and Tourism Council, right? World Travel and Tourism Council. They, in collaboration with the Oxford Economies, they have released the 2024 Economic Impact Trend Report, right? It highlights the top 10 global tourism economies for 24-25, and according to them, our country India, we stand at the 8th position with a travel and tourism contribution of $231.6 billion. In this only, it is United States of America that secured the first position with $2,360 billion, followed by China and Germany on the third position. Correct? In 2024, if we see the global travel and tourism sector, it contributed around $10.9 trillion in the world's GDP. This includes the direct, indirect, and induced impacts of the sector, accounting for 10% of the global economy. Here you can see USA first, second China, third Germany, fourth Japan, and on 8th position is our India. Next is banking and finance. Asia Index unveiled the new BSE Insurance Index. I repeat, Asia Index Private Limited, the wholly owned subsidiary of Bombay Stock Exchange, they have unveiled a new index named BSE Insurance Index. This newly launched index is derived from the constituents of BSE 1000 index that are classified under the insurance sector. Correct? This index has a base value of 1000 with its inception date as 18th of June 2018. The index, which caps stocks weights at 25%, will be revised semi-annually, and this index is used for running passive strategies such as your exchange traded funds, that your ETFs and index funds. Next is KMBL and Indigo. They have relaunched the co-branded credit card with Indigo Blue Chips Reward. KMBL, that is Kotak Mahindra Bank Limited, and Indigo Alliance, they have partnered to relaunch the co-branded credit card powered by Indigo Blue Chip, that is Indigo's newly introduced loyalty program. This aim basically attract both frequent flyers and customers looking to earn rewards on everyday spending. The cards are Indigo Kotak Credit Card and Indigo Kotak Premium Credit Card. Next is CAMS, that is Computer Age Management Services. They have launched the CAMSPay Payment Gateway, that is a next generation platform that is designed to meet the evolving needs of the businesses in India. The gateway is accredited by the MasterCard, Visa and RuPay, reflecting their adherence to the highest standards of compliance and security. This CAMSPay, it is developed in partnership with MyLaPay to ensure security. Ratnakar Bank Limited service as the bank's identification number sponsor for smooth card processing and banking operation. So CAMS, they have launched CAMSPay, a new payment gateway.
This new gateway is designed to support over 5,000 transactions per second, which will benefit the high volume enterprises. And also the India's digital payment market, it is projected to reach $10 trillion by 2030, growing at a CAGR of over 20%. Next is AIIB, that is Asian Infrastructure Investment Bank. They have signed a $100 million, that is approximately 830 crore rupees funding agreement with IIFL Home Finance Limited to enhance affordable housing finance access for the economically weaker sections and low income groups in India. This investment will also support eco-friendly construction practices in line with India's climate and sustainability goals. And this marks Asian Infrastructure Investment Bank's first partnership with IIFL Home Finance Limited. The funding will be utilized to support both demand side and supply side housing needs. Next is economy and business. Nvidia, they became the world's first company to hit $4 trillion market valuation, right? Very important, students. USA based Nvidia Corporation, this is a global leader in computing and AI, that is they are making basically the chips and the servers, and they became the world's first publicly traded company that has achieved a market cap of $4 trillion. This milestone solidified the Nvidia's dominance in the ongoing AI hardware revolution. With this achievement, Nvidia has surpassed Microsoft Corporation, which holds the second position in the market cap with a $3.75 trillion of value, while Apple, they ranks third with a valuation of $3.17 trillion. Next is appointments and resignation. Kumar Mangalam Birla appointed as the USI SPF Board of Director and Executive Committee. I repeat, Kumar Mangalam Birla, as you can see him in the picture, he is an Indian billionaire and the chairman of the Aditya Birla Group. He was appointed to the board of the directors of US India Strategic Partnership Forum, that is USI SPF, that is US India Strategic Partnership Forum. He will also serve on the executive committee of the board here. And if we talk about him, Kumar Mangalam Birla, he has been serving as the chairman of Aditya Birla Group since 1995. He currently serves as the chancellor of the BITS Pilani Rajasthan and was the former chairman of IMA Ahmedabad and Indian Institute of Technology, Delhi. He has also been honored with Padma Bhushan in 2023, that is the third highest civilian award. Next is HUL, that is Hindustan Unilever Limited. They have announced the appointment of Priya Nair as the Chief Executive Officer and Managing Director starting from 1st of August 2025 for a period of 5 years, and she will succeed Rohit Java, who will step down on 31st of July 2025 after 2-year tenure. Also, Priya Nair, she will become the first woman. So this is the important question that you need to remember. Next is World Population Day, observed on 11th of July. This day is observed basically to highlight the urgency of population issues and the connection between the population dynamics, the environment and the development. This year it is the 31st anniversary of the International Conference on Population and Development Program of Action. There is a theme also for this day, students: empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world. Next, here you can see, if we look at the rank wise, right, that if we are talking about the top most populated cities, right, on the first is Tokyo of Japan, second is Delhi in India, third is Shanghai, China, and fourth is Dhaka, Bangladesh. And here you can see the respected population in that particular area. Next is International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 Genocide in Srebrenica 2025, observed on 11th of July. Right, this day is observed every year across the globe on 11th of July to honor the memory of over more than 8,300 Bosniak men and boys who were systematically murdered by the Bosnian Serb army in around Srebrenica, Bosnia in 1995. And this year in 2025, it was the 30th anniversary of this genocide that was committed. This day is observed by United Nations General Assembly. Next is World Horse Day, observed on 11th of July. This day is observed basically to raise awareness about the horses, the breed of the horses, and to celebrate and protect their contribution, or to celebrate and protect the contribution of global communities to horses to humanity, right? Basically to save them, to maintain their ecosystem, to preserve them, right? This day is observed. Also, it is observed on 11th of July. Next is state news, students. Maharashtra has declared
Sarvjanayak Ganesh Mahotsav as state festival. I repeat, Government of Maharashtra, they declared the 132-year-old Sarvjanayak Ganesh Mahotsav, that is the public Ganesh festival, as the state festival of Maharashtra. The announcement was made in the Maharashtra Legislative Assembly by Ashish Shelar, the Minister of Cultural Affairs, and Sarvjanayak Ganesh Mahotsav was started in 1893 by Lokmanya Bal Gangadhar Tilak to unite people during India's freedom struggle. Over the years, it grew into a major cultural celebration across Maharashtra. And this day, this festival is basically now spent across 10 days. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. How many total medals did India secure in the 4th edition of Thailand Open International Boxing Tournament from 24th of May to 1st of June in Bangkok, Thailand? It is a total of 8 medals, which included 2 gold, 1 silver and 5 bronze. Next, who won the F1 Armaco Gran Premio de España, that is the Spanish Grand Prix that was held in Barcelona, Spain. So who won this Barcelona, Spain, Spanish Grand Prix held in Barcelona, Spain? Oscar Piastri. Oscar Piastri, he is from UK and he drives for McLaren. He secured the first position here. Next, Australian all-rounder Glenn Maxwell has announced retirement from ODI cricket, bringing an end to a distinguished 13-year career in the ODI format. He has been part of 2 World Cup winning squads for Australia in ICC Men's Cricket World Cup, that is in 2015 and 2023. Right option is option 4th. And earlier he retired from the Test cricket format in 2017. Next, identify the country that topped the medal tally at the Ulaanbaatar Open 2025 wrestling conducted from 29th of May to 1st of June, in which India secured the 2nd position. So which country topped the medal tally? It is Mongolia that secured the top position here in the medal tally at the Ulaanbaatar Open 2025 wrestling that was conducted from 29th of May to 1st of June. And our country India, here we secured the 2nd position in the medal tally with a total of 21 medals. And in this 21 medals we see 6 gold, 7 silver and 8 bronze. And Mongolia, they secured a total of 29 medals. Next is Kulnavut Vitidrasan won the men's single title at the 2025 Singapore Open in badminton, held from 27th of May to 1st of June at the Singapore Indoor Stadium in Kalang, Singapore. Vitidrasan hails from which state, or he hails from where? So Vitidrasan hails from Thailand. Next is mention the name of the football club which won its first ever UEFA Championship League 2025 by defeating Inter Milan Football Club in the final held at Munich, Germany. So what is the name of that group or football club? It is PSG, that is Paris Saint-Germain Football Club, right? They have won their first ever UEFA Champions League 2025 title by defeating Inter Milan Football Club. Next, identify the correct statement regarding the Norway Chess 2025, an international chess tournament held in Stavanger, Norway from 26th of May to 6th of June. If we look at the option, we have to find the correct statement. So option A is right and C is right, B is wrong. B is saying that D. Gukesh from India won the Norway Chess 25 in the open section category. Did he won it? No. Magnus Carlsen had won it, right? Magnus Carlsen, the world's #1 chess player, won the Norway chess title in the open category. Next, identify the Indian cricketer who announced his retirement from all the formats of professional cricket in June 2025. So Piyush Pramod Chawla, right? He is the Indian cricketer who has announced retirement from all the forms of professional cricket. Next, identify the correct statement regarding French Open held in Paris, France in June 2025. If we look at the options here, all these 3 options are rightly mentioned. Next, who among the following won the men's singles final of the Indonesian Open held in Jakarta, Indonesia? So, who among the following has won the women's singles final? N.C. Young, she is from South Korea. If we talk about men's category, Ender Antonsen, who is the world's #3, has won the men's single title of the Indonesian Open, and in women's single title,
Young, right? She's not South Korea. I repeat, she's from South Africa, right? In the women's final, South Africa's Young, that is world's number one in women category, she has won the women's single title. And who won the men's single title? Ender Antonsen. Ender Antonsen is from Denmark. Next, mention the country which topped the 2025 Taiwan Athletics Open held in Taipei City in Taiwan in June with a final medal tally of 16 medals. So it is our country, India. Next, identify the country that won the Union of European Football Association, that is UEFA UEFA Nations League, by defeating Spain in the finals in Munich, Germany. So identify that country. It is Portugal, right? And they have won their second UEFA Nations League title by defeating Spain by 5-3 in the penalty shootout after a 2-2 final. And this was the fourth edition of the tournament. Next, name the organization that officially unveiled the logo of the inaugural Shooting League of India, which is scheduled to be held from 20th of November to 2nd of December 2025. It is National Rifle Association of India. Next, mention the name of the West Indies cricketer who has announced his retirement from international cricket at the age of 29 in June 2025. It is Nicholas Pooran. Next, identify the country that defeated by South Africa to win the that country that defeated South Africa to win the 23-25 International Cricket Council World Chess Championship final held in London, England in June 2025. So which is that country? It is Australia, right? And this is the third edition of the ICC WTC, that is World Test Championship, that was held from 16th of June to 14th of June. Next, who won the 63rd edition of the Canadian Grand Prix held in Montreal, Canada, marking his first F1 Grand Prix victory of the 2025 season? So George Russell. George Russell, he is from Germany. Sorry, he represents Germany-based company, that is Mercedes. George Russell, he is from which country? This is your homework. Next, mention the position that India secured in the ISSF Rifle, Pistol and Shotgun World Cup held in Munich, Germany, in which China topped the medal tally with a total of 7 medals. It is India secured third position in the medal tally, right? And the overall medals are India is 4, out of which 2 gold, 2 bronze. Next, name the first Indian sponsor team that made history by winning the rapid section of the third edition of the FIDE World Rapids and Bliss Team Championship held in London in June 2025. It is MGDI. This is the first Indian sponsor team to win the rapid section of the 2025 FIDE Rapids and Blitz Team Championship. Next, identify the table tennis team that clinched their first maiden ultimate table tennis title, defeating the Jaipur Patriots in the final held in Ahmedabad, Gujarat. It is U Mumba Table Tennis. Next, with a throw of how much distance did India's Neeraj Chopra won the Paris Diamond League 2025 title held in Paris, France, defeating Germany's Julian Weber? It is 88.16 meter throw. Next, name the mascot of the 12th World Para Athletics Championship going to be held in New Delhi, launched by Paralympic Committee of India in June 2025. So, name the mascot here. It is Viraj, right? And the tournament will be held from 27th of September to 5th of October at Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. That will feature 186 medals. Next, in June, which state signed a memorandum of understanding with Hockey India to host the FIH Men's Junior World Cup 2025? Right option is Tamil Nadu. Now students, let's move to the homework section. First question is, tell me who has been reappointed as the CBDT chairman, and this extension is for 1 year. Second question, tell me recently who has been appointed as the managing director for Bajaj Consumer Care. Third question, who has been appointed as the brand ambassador for the World Para Athletics Championship that will be in New Delhi. Fourth question, who has been appointed as the new Chief Executive Officer of Ugro Capital. And fifth question, students,
tell me recently when do we observed MSME day and the addition of it. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. Also tell me, students, recently XAI, they have launched the new version of the Grok. What is this Grok and what is the new version we are talking about? Tell me about this also. This is also your homework section, right? So that's all for the day. Thank you and have a nice day. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं. तो दोस्तों, आज की वीडियो में 12, 13 एंड 14 जुलाई के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा. अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ. ऑल्सो स्टूडेंट्स, सुबह 5 बजे डेली बेसिस पे हम ये वीडियोस अपलोड करते हैं, तो इनको देखना मत भूलो. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे. आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हब, राइट. ये बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके द्वारा मिलके हब लॉन्च किया गया एंड स्पोक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हब लॉन्च किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में. ये 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे. देन पहला RPL को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा अंडर आदि कर्मयोगी अभियान बेंगलुरु कर्नाटक में ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए. देन MEITY एंड बिट्स पिलानी, इन्होंने MOU साइन किया टू लॉन्च प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी. दैन इंडियन रेलवेज, इन्होंने एक MOU साइन किया DFCCIL के साथ टू डिप्लॉय MVIS ट्रेन सेफ्टी सिस्टम को. ऑल दीज थिंग्स एंड मेनी मोर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा. तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से. इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025, ये आपकी 8 जुलाई से 10 जुलाई तक हमें देखने को मिला ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में. एंड न्यू दिल्ली में भी कहाँ पर हुआ ये? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, जो कहाँ पर है? यशोभूमि, जो कि न्यू दिल्ली में आ जाता है, द्वारका एक्सप्रेस वे पर, राइट. तो यहाँ पर हमें ये इवेंट देखने को मिला. ये 3 दिन का इवेंट था, जो कि IESA के द्वारा कंडक्ट कराया गया था. IESA क्या है? इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस. ये एक लीडिंग इंडस्ट्री अलायंस है जिसका फोकस है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ई मोबिलिटी, इन सब के ऊपर. इस कॉन्फ्रेंस में हमें 30 कंट्री से भी ज़्यादा का पार्टिसिपेशन देखने को मिला एंड 10,000 से भी ज़्यादा विजिटर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया. इसी के अलावा अगर हम देखें तो ये 11वां एडिशन था इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक का, इंपॉर्टेंट. फिर इसी के अलावा यहाँ पर हम देखेंगे हर्ष मल्होत्रा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं. इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडियाज रोड मैप फॉर व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन. इसी के अलावा अगर हम बात करें तेलंगाना, इन्होंने बैक किया IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 को अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट लीडरशिप इन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग. एंड यहीं पे IESA के द्वारा लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ IESA इंडिया हाइड्रोजन रिपोर्ट को रिलीज किया गया ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ IESW 2025, जो रिपोर्ट प्रोजेक्ट करती है दैट इंडिया की जो हाइड्रोजन डिमांड है वो बढ़ने वाली है एट अ CAGR ऑफ 3%, रीचिंग 8.8 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम. इवन अगर आपको याद हो तो लेह लद्दाख में NTPC के द्वारा अभी ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल बसेस को लॉन्च किया गया. अगर मैं IESA की बात करूं तो इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? पुणे, महाराष्ट्र में. एंड प्रेसिडेंट रहेंगे देव माल्या सेन. इस्टेब्लिश इसको 2012 में करा गया था. नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया. इन्होंने इनॉग्रेट किया VTU VRIF TCOE हब को, पहली चीज. दूसरी स्पोक CEO को. ये दोनों चीज बेंगलुरु कर्नाटका में लॉन्च करी गई, राइट. अगर हम इसके बारे में देखें तो ये VTU VRIF COE क्या है? ये बेसिकली VTU है विश्ववर्सिया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी. VRIF क्या है? विश्ववर्सिया रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट फाउंडेशन, राइट. बेसिकली यहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर काम किया जाएगा. विश्ववर्य रिसर्च एंड इनोवेशन फाउंडेशन, VRIF. एंड TCOE क्या है? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. ये हब यहाँ पे लॉन्च किया गया है, राइट. एंड बेसिकली यहाँ पर आपकी 6G के ऊपर काम किया जाएगा, 5G के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब के ऊपर यहाँ पर हमें काम होता हुआ दिखेगा. एंड इसकी फिर बात करें स्पोक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, तो यहाँ पर भी हम देखें ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे फोकस रहेगा. स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा, स्टार्टअप्स को फंडिंग देखने को मिलेगी एंड टुगेदर यहाँ पे ग्रो करने का काम किया जाएगा. इसके बाद आ जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन को भी यहाँ पे एड्रेस किया गया इन बेंगलुरु, सेटिंग एन इंपॉर्टेंट रोड मैप फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया पोस्ट.
फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया पहला आरपीएल अंडर द आदि करम योगी अभियान इन बेंगलुरु कर्नाटका, राइट। आदि करम योगी अभियान क्या था, बेसिकली ये जून 2025 में ही लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली क्या था कि हमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करानी है, उनको यहाँ पर उनकी लाइफ को बेटर करना है, राइट। जैसे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, करेक्ट। एंड अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा पहला रीजनल प्रोसेस लैब को लॉन्च किया गया ऑफ द आदि करम योगी अभियान, राइट। एंड ये जो इनिशिएटिव है ये एक नेटवर्क बनाएगा ऑफ 20 लाख ट्राइबल ग्रास रूट्स का, जहाँ पे आप देखेंगे विलेज लेवल भी होंगे, विलेज लेवल से भी लोग होंगे, पंचायत से भी लोग होंगे, करेक्ट। एंड लास्ट माइल सर्विसेज पहुंचाने का काम किया जाएगा ट्राइबल रीजन में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपके स्टेट मास्टर ट्रेनर्स होंगे जो कि ट्रेन करेंगे डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स को, जो कि फर्दर यहाँ पे एंकरेज करेंगे लोगों को, राइट। उनको अवेयरनेस क्रिएट कराएंगे अबाउट दिस सर्विसेज, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बेनिफिट करेंगे, उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करा के उनकी लाइफ को बेटर करने का काम करेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर MEITY, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक MOU साइन किया राजस्थान बेस्ड बिट्स पिलानी के साथ, ताकि एक 8 वीक का प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जा सके साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए फॉर द वेरियस गवर्नमेंट्स, SPSUs एंड प्राइवेट सेक्टर में, राइट। जिससे साइबर सिक्योरिटी को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिल रही हैं, क्या क्या न्यू साइबर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इवन ये जो 8 वीक का हाइब्रिड साइबरिटी प्रोग्राम होगा, सर्ट जो कि है आपका कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, इनके द्वारा किया जाएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ MEITY। फिर यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को साइबर थ्रेट्स के बारे में, नेटवर्क सिक्योरिटीज के बारे में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के बारे में, क्रिप्टोग्राफी के बारे में, लीगल फ्रेमवर्क्स के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडियन रेलवेज, इन्होंने एक MOU साइन किया DFCCIL के साथ टू डिप्लॉय MVIS ट्रेन सेफ्टी सिस्टम को, राइट। तो इंडियन रेलवेज ने ये MOU साइन किया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम को फॉर मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ द रोलिंग स्टॉक, राइट। ये बेसिकली MVIS ये इनकॉर्पोरेट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को, ताकि जो रेलवे ट्रैक्स पे हैं उसको डिप्लॉय किया जा सके। एंड वहाँ पे बेसिकली ये क्या करेगा, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को लेगा अंडर गियर ऑफ मूविंग ट्रेन्स की, जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कोई लूज पार्ट तो नहीं है, कोई मिसिंग कॉम्पोनेंट तो नहीं है। एंड फिर वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे करेक्ट एक सिग्नल देगा कि सो एंड सो प्रॉब्लम है, एंड उस बेसिस पे फिर उस प्रॉब्लम को रिपेयर किया जाएगा, राइट। इससे सेफ्टी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं केरला के अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, इनको रिसीव हुआ ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम BIS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन है ये ISO 9001-2015, राइट। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम BIS के द्वारा ये दिया जाएगा। एंड एम रहेगा यहाँ पे, एंड किस लिए दिया गया इनका, राइट। इनके जो कमिटमेंट है क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए एंड एफिशिएंट पुलिसिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, उस चीज़ के लिए यहाँ पे ये सर्टिफाइड इनको सर्टिफिकेशन से प्रोसेस दिया गया। एंड ये 2 स्टेज की ऑडिट प्रोसेस थी जिन्होंने इसमें क्वालिफाई किया, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी प्रोसेस एंड मॉडर्न कंप्लायंट हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करा गया है। फिर आ जाते हैं मुंबई के कारनेक ब्रिज को रीनेम किया गया आफ्टर द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, राइट। तो देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने कारनेक ब्रिज की रीनेमिंग कर दिया टू सिंदूर ब्रिज। सिंदूर हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था हमने देखा था, ये मिलिट्री ऑपरेशन था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था अगेंस्ट द टेरर साइट्स इन पाकिस्तान अभी मई में। एंड अब इस ब्रिज का नाम चेंज करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। फोर्ब्स ने अभी एक लिस्ट रिलीज की है, अमेरिका के रिचेस्ट इमिग्रेंट्स 2025 की ये लिस्ट रहेगी। एंड इंडिया यहाँ पे लीड कर रहा है विद अ टोटल ऑफ, कितने यहाँ पे लिस्ट किए गए इंडिया से, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 12 इंडियंस इस लिस्ट में हैं। एंड अगर हम टॉप 10 में बात करें तो जय चौधरी यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं जो कि 8th पोजीशन पर आते हैं, राइट। एंड यहीं पे देखें तो ये फोर्ब्स के द्वारा लिस्ट रिलीज की गई है, अमेरिकाज रिचेस्ट इमिग्रेंट 2025 की लिस्ट, रिवीलिंग दैट इंडिया इज द टॉप कंट्री ऑफ ओरिजिन विद 12 इंडिया बॉर्न बिलियनियर्स, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट बिलियनर्स हैं ऑफ USA। एंड जय चौधरी CEO ऑफ जेड स्केलर यहाँ पे ओनली इंडियन है जो कि टॉप 10 पोजीशन पे आते हैं, 8th पोजीशन पे रहेंगे विद $17.9 बिलियन ऑफ नेटवर्थ। अगर हम बात करें इमिग्रेंट्स की तो USA में ये लोग बाहर से हैं, लाइक इंडिया से लोग गए, राइट। तो USA के लिए ये इमिग्रेंट्स हो गए, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड अगर हम देखें यहाँ पे 125 फॉरेन बॉर्न USA बिलियनर्स थे इस लिस्ट में फ्रॉम 43 कंट्रीज, जो होल्ड करते हैं ऑलमोस्ट 1.3
ट्रिलियन डॉलर। साउथ अफ्रीका के इलॉन मस्क यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं, राइट। फर्स्ट पोजीशन किन्होंने सिक्योर करी? इलॉन मस्क ने सिक्योर करी विद 393.1 बिलियन डॉलर ऑफ नेटवर्थ। ये साउथ अफ्रीका से है। सेकंड पोजीशन पे आते हैं सर्जे ब्रायन, ये रशिया से हैं एंड 139.7 बिलियन डॉलर की इनकी नेटवर्थ है। थर्ड पोजीशन पे जेनसन हुआंग, ताइवान के, 137.9 बिलियन डॉलर इनकी नेटवर्थ है। एंड जे चौधरी इंडिया के 17.9 बिलियन डॉलर से 8th पोजीशन पे। फिर आ जाते हैं WTTC, इन्होंने रिलीज की टॉप 10 ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज फॉर 2024-25 की लिस्ट एंड इंडिया रैंक करता है यहाँ पर 8 एंड यूएसए ने टॉप किया इन दिस लिस्ट। तो अगर यहाँ पर हम देखें WTTC, ये है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, इन्होंने कोलैबोरेट किया ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के साथ एंड इन्होंने रिलीज की है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड रिपोर्ट, करेक्ट। एंड ये हाईलाइट करती है टॉप 10 ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज के लिए जहां पे टूरिज्म से बहुत ज्यादा इकोनॉमी जनरेट होती है। एंड इस लिस्ट में इंडिया हमारा स्टैंड करता है 8th पोजीशन में। इससे पहले लास्ट इंडेक्स में जो 23 के लिए रिलीज हुई थी, इंडिया 10वें पोजीशन पे था। अब हम 10th पोजीशन पे आ जाते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखाता है इंडिया में टूरिज्म की। अगर यहीं पे देखें, यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे है विद 2360 बिलियन डॉलर, राइट। चाइना सेकंड पोजीशन पे, देन जर्मनी थर्ड पोजीशन पे। एंड 2024 में जो ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर था, इसने 10.9 ट्रिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट किया टू द वर्ल्ड्स जीडीपी। यहीं पे आप देख सकते हैं यूएसए फर्स्ट, सेकंड चाइना, थर्ड जर्मनी, फोर्थ जापान एंड हमारा इंडिया आ जाता है 8th पोजीशन पे। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। एशिया इंडेक्स इन्होंने अनवेल किया एनएससी बीएससी न्यू बीएससी इंश्योरेंस इंडेक्स को, राइट। आई रिपीट, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड होली ओन्ड सब्सिडरी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। इन्होंने अनवेल किया है एक नया इंडेक्स जिसका नाम है बीएससी इंश्योरेंस इंडेक्स। ये नया लॉन्च्ड इंडेक्स ये ड्राइव किया जाएगा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बीएससी 1000 इंडेक्स दैट आर क्लासिफाइड अंडर द इंश्योरेंस सेक्टर। फिर आ जाते हैं केएमबीएल, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एंड इंडिगो, इन्होंने रीलॉन्च किया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को विद इंडिगो ब्लू चिप रिवॉर्ड्स। ये जो मूव है ये एम करता है टू अट्रैक्ट बोथ फ्रीक्वेंट फ्लायर्स एंड कस्टमर्स दैट आर लुकिंग टू अर्न रिवॉर्ड्स ऑन एवरीडे स्पेंडिंग। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जो कार्ड्स याद रखने हैं आपको, वो है इंडिगो कोटक क्रेडिट कार्ड एंड इंडिगो कोटक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। फिर आ जाते हैं CAMS, इन्होंने लॉन्च किया कैम्स पे न्यू पेमेंट गेटवे को। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्होंने लॉन्च किया कैम्स पे पेमेंट गेटवे, जो कि नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म रहेगा डिजाइन टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया। ये जो गेटवे है इट इज accredited by मास्टरकार्ड, वीजा एंड रूपे, जो रिफ्लेक्ट करता है देयर अधरेंस टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी। कैम्स पे इसको डेवलप किया गया इन पार्टनरशिप विद माई लैब पे एंड ये इंश्योर करता है सिक्योरिटी अलॉन्ग विद रत्नाकर बैंक लिमिटेड, जो कि यहाँ पे बिन नंबर बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर स्पॉन्सर रहेगा फॉर स्मूथ कार्ड प्रोसेसिंग एंड बैंकिंग ऑपरेशंस। तो कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम ने इन्होंने कैम्स पे यहाँ पे नया पेमेंट गेटवे लॉन्च किया। इसके बाद आ जाते हैं AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने कमिट किया $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट टू IIFL होम फाइनेंस फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग इन इंडिया, राइट, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसिंग हम प्रोवाइड कराई जा सकें फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप इन इंडिया, राइट। इससे डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड को बेनिफिट देखने को मिलेगा एंड जो लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं उनको यहाँ पे फंडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पे। एनवीडिया बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू हिट $4 ट्रिलियन मार्केट कैप वैल्यूएशन, राइट। ये वो वर्ल्ड की पहली कंपनी बन गई है एनवीडिया जिन्होंने $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप अचीव कर ली है एंड ये काफी ज्यादा बूस्ट मिला इनको आफ्टर द लॉन्च ऑफ AI, बिकॉज ये कंपनी आपकी चिप्स मैन्युफैक्चर करती है जो कि AI को रन करने में बहुत बेनिफिशियल रहेगी, राइट। एंड इनका जो मार्केट कैप है $4 ट्रिलियन पहुंच गया है। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट विद $3.75 ट्रिलियन। थर्ड पे एप्पल आ जाता है विद अ वैल्यूएशन ऑफ $3.17 ट्रिलियन। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। कुमार मंगलम बिरला, इनको अपॉइंट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्पेशल पार्टनरशिप फोरम का, राइट। आई रिपीट, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्पेशल पार्टनरशिप फोरम, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं एंड ये सर्व करेंगे ऑन द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बोर्ड। एंड कुमार मंगलम बिरला ये सर्व करते हैं चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप सिंस 1995। ये रह चुके हैं चांसलर ऑफ बिट्स पिलानी एंड IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद ऑल्सो।
इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है सन 2023 में। नेक्स्ट आ जाते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इन्होंने अपॉइंट किया प्रिया नेयर को एज द फर्स्ट वीमेन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 5 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेंगी। 1 अगस्त 2025 से इनका टर्म स्टार्ट होगा एंड रोहित जावा को ये सक्सीड करेंगी टू बी द फर्स्ट वीमेन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं पॉपुलेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। एंड हमारी कंट्री इंडिया अब वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है एंड पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। पॉपुलेशन डायनेमिक्स की वजह से हमारी डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इस बार 31वां एनिवर्सरी हमने इसकी ऑब्जर्व करी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन की। एंड यहीं पे ये थीम याद रखेंगे। थीम है आपकी एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। फिर आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है टोक्यो जापान में, सेकंड दिल्ली इंडिया में, थर्ड शंघाई चाइना में, फोर्थ है ढाका बांग्लादेश। नेक्स्ट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कमेमोरेशन ऑफ द 1995 जेनोसाइड इन सर्बिंका, जो कि 2025 में हमने 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया। 1995 में जो आपके लोगों की यहाँ पे जेनोसाइड किया गया था, जिन लोगों की डेथ हुई थी, राइट, जिनकी हत्या हुई थी, ऑलमोस्ट 8300 बॉस्नियन मुस्लिम्स थे, मेंस एंड बॉयज थे, जहाँ पर उनको मर्डर कर दिया गया था बॉस्नियन सर्ब आर्मी के द्वारा 1995 में। उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करा के उनको ऑनर करने के लिए, उनको रिमेंबर करने के लिए, उनकी मेमोरी में ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 11 जुलाई को। इस बार 30वीं एनिवर्सरी हमने इसकी ऑब्जर्व करी। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड हॉर्स डे पर स्टूडेंट्स 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है हॉर्सेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। एंड इन्होंने इन ह्यूमंस का कितना साथ दिया है, कितना फ्रेंडली बन के रहे हैं। एंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री में ये बहुत बड़े एक सोर्स ऑफ ट्रैवल भी होते थे, करेक्ट। उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 11 जुलाई को हमने इस डे को ऑब्जर्व किया। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया सार्वजनिक गणेश महोत्सव को एज द स्टेट फेस्टिवल। आई रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सार्वजनिक गणेश महोत्सव, जो कि पब्लिक गणेश फेस्टिवल है, इसको स्टेट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र डिक्लेयर कर दिया गया है। टेक अ नोट ऑफ दिस। 10 दिन लंबा ये आपका फेस्टिवल रहता है एंड महाराष्ट्र में बहुत मान्यता है गणेश फेस्टिवल की, करेक्ट, इसीलिए इसको स्टेट फेस्टिवल यहाँ डिक्लेयर किया गया। तो मार्क करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यही, आपकी न्यूज़ की यहीं खत्म होती है। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है ओडीआई क्रिकेट से एंड ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ 2 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड्स फॉर ऑस्ट्रेलियन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 एंड 2023 के लिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट टॉप द मेडल टैली एट द उलानबातर ओपन रेसलिंग कंडक्टेड फ्रॉम 29 मई टू 1 जून इन विच इंडिया सिक्योर्ड सेकेंड पोजिशन। तो किन ने यहाँ पे टॉप किया है मेडल टैली में, वो है मंगोलिया। अगर मंगोलिया के मेडल्स देखें तो मंगोलिया के 29 मेडल्स हैं, जिसमें से 7 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज रहेंगे। हमारी कंट्री इंडिया अगर हम देखें यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ जाती है मेडल टैली में विद 21 मेडल्स, जिसमें से 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज रहेंगे। नेक्स्ट, कुनलावुत विचित्रसन, इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है सिंगापुर ओपन का फॉर बैडमिंटन। पूछा जा रहा है ये जो विचित्रसन है ये कहाँ से हैं, ये थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। Next, mention the name of the football club which won its first ever UEFA Champions League title by defeating Inter Milan Football Club in the final, जो कि एलियंस एरेना में हुआ था म्यूनिच जर्मनी में। So mention the name of the football club, उस फुटबॉल क्लब का नाम बताओ, क्या रहेगा? वो है PSG, पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्वे चेस 2025, जो कि एक एनुअल इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट है, जो कि नॉर्वे में हुआ 26 मई से 6 जून तक। अगर यहाँ पे देखें हम ऑप्शन, तो ऑप्शन ए बिल सही है, बी और सी भी सही है, बी गलत है। ये कह रहे डी गुकेश जो कि इंडिया से हैं, इन्होंने नॉर्वे चेस टाइटल को जीत लिया इन ओपन सेक्शन कैटेगरी। तो नहीं, डी गुकेश ने नहीं जीता, मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है, उन्होंने जीता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द इंडियन क्रिकेटर हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट इन जून 2025। तो वो है पीयूष प्रमोद चावला। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रेंच ओपन, जो कि पेरिस में हुआ इन जून 2025। अगर यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे।
नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द वीमेन सिंगल फाइनल एट द इंडोनेशियन ओपन, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। तो वीमेन सिंगल टाइटल इंडोनेशियन ओपन का एनसी यंग ने जीता। क्या एनसी यंग साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, राइट। यहीं पे अगर मैं मैन सिंगल की टाइटल की बात करूं तो मैन सिंगल टाइटल किन के द्वारा जीता गया, वो है एंडर्स एंटोनसन, ठीक है। नेक्स्ट, एंड ये 43rd एडिशन था आपका इंडोनेशियन ओपन का। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री दैट विच टॉप द 2025 ताइवान एथलेटिक्स ओपन held in Taipei city in Taiwan in June with a final medal tally of 16 medals. तो ये रहेगी इंडिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट वन द यूएफए नेशंस लीग टाइटल बाय डिफीटिंग स्पेन इन द फाइनल हेल्ड इन द म्यूनिच जर्मनी इन जून 2025। तो वो है पोर्चुगल। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफिशियली अनवेल्ड द लोगो ऑफ द इनॉग्रल शूटिंग लीग ऑफ इंडिया विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 20 नवंबर टू 2 दिसंबर 2025। सो नेम दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द वेस्ट इंडीज क्रिकेटर जिन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से एट द एज ऑफ 29। तो वो है निकोलस पूरन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया टू विन द 2023 से 25 का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो कि लंदन यूके में हुआ था। तो किन्होंने जीत लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया फाइनल्स में, एंड ये 3rd एडिशन था आपका आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 63rd एडिशन ऑफ कैनेडियन ग्रैंड पिक्स को जीत लिया है, वो है जॉर्ज रसल। जॉर्ज रसल किन के लिए ड्राइव करते हैं, ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द पोजीशन दैट इंडिया सिक्योर्ड इन द आईएसएसएफ राइफल पिस्टल एंड शॉटगन वर्ल्ड कप, जो कि म्यूनिच जर्मनी में हुआ, इन विच चाइना ने टॉप किया मेडल टैली में विद द टोटल ऑफ 7 मेडल्स। तो ये 3rd एडिशन था, ये 3rd पोजीशन थी जो कि इंडिया ने सिक्योर करी इन दिस आईएसएसएफ राइफल पिस्टल एंड शॉटगन वर्ल्ड कप, जहां पे चाइना ने टॉप किया इन दिस मेडल टैली विद द टोटल ऑफ 7 मेडल्स। इंडिया के टोटल 4 मेडल थे, जिसमें से 2 गोल्ड थे, 2 ब्रॉन्ज थे। नेक्स्ट, mention the first Indian sponsor team that made history by winning the rapid section of the 3rd edition of the FIDE World Rapids and Blitz Team Championship, जो कि लंदन में हुआ इन जून 2025। तो mention that Indian sponsor team, वो है MGDI। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द टेबल टेनिस टीम जिन्होंने अभी पहला मेडन अल्टीमेट टेबल टेनिस टाइटल को जीत लिया बाय डिफीटिंग जयपुर पैट्रियट्स इन द फाइनल्स हेल्ड इन अहमदाबाद, गुजरात। तो वो है यू मुंबा टेबल टेनिस। नेक्स्ट, विद अ थ्रो ऑफ हाउ मच डिस्टेंस नीरज चोपड़ा ने अभी पेरिस डायमंड लीग को जीत लिया है बाय डिफीटिंग जर्मनी के जूलियन वेबर। तो 88.16 मीटर का ये थ्रो था, जहां पर नीरज चोपड़ा ने इसको थ्रो करके यहाँ पे इस टाइटल पेरिस डायमंड लीग को जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द मैस्कॉट ऑफ द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप गोइंग टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली लॉन्च बाय पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इन जून 2025। तो उस मैस्कॉट का नाम बताओ, वो है विराज। Next, in June, which state signed an MOU with Hockey India to host the FIH Men's Junior World Cup 2025? तो किस स्टेट ने यहाँ पे MOU साइन किया, वो है तमिलनाडु। Now students, let's move to the homework section. First question is, tell me who has been reappointed as the CBDT chairman, and this extension is for 1 year. Second question, tell me recently who has been appointed as the managing director for Bajaj Consumer Care. Third question, who has been appointed as the brand ambassador for the World Para Athletics Championship that will be in New Delhi. Fourth question, who has been appointed as the new Chief Executive Officer of Ugro Capital. And fifth question, students, tell me recently when do we observed MSME Day and the addition of it. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. Also tell me, students, recently XAI, they have launched the new version of the Grok. What is this Grok and what is the new version we are talking about? Tell me about this also. This is also your homework section, right? So that's all for the day. Thank you and have a nice day.